Okay. Now one numerical is there. Find the mass of one molecule of oxygen, that is O2, in AMU, atomic mass unit, and in gram. Once again, find the mass of one molecule of oxygen, that is O2, in AMU and in gram. AMU means U, atomic mass unit. First of all, what is the average atomic mass of oxygen? The average atomic mass of oxygen is 16U, 16.0 U. Therefore, molecular mass of O2, one oxygen means 16.0 U. So therefore, molecular mass of O2 containing two atoms. So therefore, 2 into 16U, it is 32U. So this is the mass of one molecule of oxygen in unified mass, that is 32U. Now, mass of one molecule, that is 32U. 1 AMU is equal to, इससे पहले हमने 1 AMU की वैल्यू निकाली थी. 1 AMU is equal to 1.66056 into 10 raised to minus 24. 1.66056 into 10 raised to minus 24, that is 1 AMU. Okay. Now, mass of one molecule of oxygen in gram. Mass of one molecule of oxygen in gram, it can be calculated by multiplying 32U by 1.66056 into 10 raised to minus 24, because of 1 AMU is equal to 1.66056 into 10 raised to minus 24 gram. So therefore 32U is equal to how many gram of oxygen, mass of one oxygen molecule? So therefore mass of one molecule of oxygen in gram is equal to 32.0 into 1.66056 into 10 raised to minus 24. So therefore by taking log, first of all you have to take anti-log of log 32.0, मल्टीप्लीकेशन है इसलिए प्लस करना है, प्लस लॉग ऑफ 1.66056 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 24. नाउ कैरेक्टरिस्टिक देखनी है 32 की कैरेक्टरिस्टिक 1 और माइनस 24 10 रेज़ टू माइनस 24 इसलिए कैरेक्टरिस्टिक बार 24 एडिशन करना है. तो 32 का लॉग है 0 में 5051 और 16 का 61 में लॉग है, 16 का 61 में लॉग है 2204. इन दोनों का एडिशन करेंगे तो एडिशन गिव्स बार 23.7255. आपको एडिशन करनी है और देखनी है आंसर आ रहा है कि नहीं. बार 23.7255 and by taking anti-log we get final answer 53. Anti-log of 7255 is 5315 और 10 रेज़ टू बार 23 है इसलिए मैंने यहाँ पर 10 रेज़ टू माइनस 23 लिया है और 1 डेसिमल के बाद पॉइंट दे दिया है. सो फाइनल आंसर इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम इज इक्वल टू 5.315 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 23 ग्राम. This is the mass of one molecule of oxygen in gram. Okay. Similarly, you have to find the mass of the following molecules in AMU and in gram. आपको छुड़ाने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है. पहला दिया है नाइट्रोजन N2, दूसरा है मीथेन CH4, तीसरा है क्लोरीन Cl2 और चौथा है वाटर H2o. ओके. इसी मेथड से आपको मास निकालना है, एक AMU में निकालना है और दूसरा ग्राम में निकालना है. यही स्टेप आपको इस्तेमाल करनी है. नाउ व्हाट इज फॉर्मूला मास? Formula mass is used only for ionic compound. Ionic compound means salts like NaCl. The compound which contains ions, cations and anions, which are held together by intermolecular force of attraction and which are arranged in three-dimensional shape. Three-dimensional shape में जिस मॉलिक्यूल को अरेंज किया जाता है और जिस मॉलिक्यूल में आयंस रहते हैं, कैटायंस और एनायंस रहते हैं, उसका इस्तेमाल करके आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मास निकल जाता है. फॉर्मूला मास इज यूज्ड फॉर आयोनिक कंपाउंड इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके. नाउ डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला मास. द फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ
atomic masses of all the atoms present in the formula. Atomic masses of all the atoms present in the formula. This is known as formula mass. Once again, फिर से एक बार definition क्या है देखो. The formula mass of a substance is the sum of the atomic masses of the atoms present in the formula. This is known as formula mass. Okay, definition भी important है. आपको कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, जो मैंने दिया वो सभी important है. Okay, now फाइंड द फॉर्मूला मास ऑफ फॉलोइंग. अब यहाँ पर तीन एग्जाम्पल दिए हैं, सॉरी 2 एग्जाम्पल दिए और 3 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने के लिए है. पहला, फाइंड द फॉर्मूला मास ऑफ फॉलोइंग, दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड. सो सोडियम क्लोराइड इट इज इक्वल टू Na plus Cl, सोडियम क्लोराइड containing 1 Na and 1 Cl. So therefore 1 into average atomic mass of Na is 23.0 and average atomic mass of chlorine is 35.5. So 1 into 23 plus 1 into 35.5. So 23 ones are 23, 35.5 ones are 35.5, and addition gives 58.5. This is the formula mass of NaCl. Okay, now formula mass of copper nitrate, cupric nitrate, CuNO3 twice. Okay, so यहाँ पर एक Cu है और NO3 दो है, 2NO3. तो देखो यहाँ पर टोटल एटम्स कौन कौन से एटम्स कितने हैं, Cu plus 2NO3. So Cu plus 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दो है, 2 3 6, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 into 2, 2 3 6 ऑक्सीजन. So therefore 1 copper, that's why 1 into 633.5, 2 nitrogen, so that's why 2 into 14.0, average atomic mass of nitrogen is 14.0, and 6 into average atomic mass of oxygen is 16.0 U. Okay, so therefore 63.5 U, 28.0 U, and 96, 16 6 96, 96.0 U. एंड इन तीनों का एडिशन करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आता है, 187.5 U. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला मास ऑफ क्यूप्रिक नाइट्रेट. अभी आपको फॉर्मूला मास निकालना है. कैल्शियम सल्फेट है, उसमें एक कैल्शियम, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन है. कैल्शियम क्लोराइड निकालना है, CaCl2, एक कैल्शियम है, 2 क्लोरीन है. और कॉपर सल्फेट है, CO एक है, सल्फर एक है और ऑक्सीजन 4 है. वो आपको इसी मेथड से आपको फॉर्मूला मास निकालना है. Now next one is 1 mole. It is very important part, very important concept. 1 mole. Now what is 1 mole? 1 mole is the amount of substance that contains. 1 mole is the amount of substance that contains as many atoms, ions, molecules or particles or electrons as there are atoms in exactly 12 gram or 0.012 kilogram of carbon 12 isotope. This is known as 1 mole. 1 mole means 1 mole is the amount of substance that contains the number of atoms, ions, molecules, particles, electrons present in 0.012 kilogram of carbon 12 isotope. कार्बन 12 आइसोटोप में जितने एटम्स होते हैं, जितने आयंस होते हैं, जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही एटम्स, सभी पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स 1 मोल में होते हैं. उसे कहते हैं 1 मोल. सो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स as many atoms, ions, molecules or particles or electrons as there are atoms in exactly 12 gram or 0.012 kilogram of the carbon 12 isotope. This is the definition of 1 mole and this is very important definition. Okay, ये आपको एग्जाम में 90% ये definition आपको एग्जाम में आ सकती है. Okay, so now let us calculate the number of atoms in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. 12 ग्राम कार्बन में कितना एटम्स होते हैं वो पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं. लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 12.0000 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. नाउ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इज, पहले हमने देखा है मास ऑफ 1 हाइड्रोजन, मास ऑफ 1 कार्बन देखा है. मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइसोटोप, mass of 1 carbon 12 atom is 1.992648 into 10 raised to minus 23. This is the mass of 1 carbon 12 atom.
एंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज 1 मोल कार्बन का मास कितना होता है? एवरेज एटॉमिक मास 12.0 ग्राम. ओके, so therefore number of atoms in 12 gram of carbon 12, number of atoms in 12 gram of carbon 12. फिर से देखो, mass of 1 carbon 12 atom is, एक कार्बन 12 एटम का मास कितना होता है? 1.992648 into 10 raised to minus 23 ग्राम. एंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास कितना है? 12.0 ग्राम. So therefore number of atoms present in 12 gram of carbon 12, it is equal to mass of 1 mole of carbon atom divided by mass of 1 carbon 12 atom. So mass of 1 mole of carbon atom is 12 gram per mole divided by mass of 1 carbon 12 atom. एक carbon 12 atom का मास कितना है? 1.992648 into 10 raised to minus 23. और इसका कैलकुलेशन मैंने लॉग से नहीं किया है, डायरेक्ट किया है, क्योंकि डायरेक्ट ये पूरी वैल्यू आपको समझ में आनी चाहिए. सो फाइनल आंसर इज मास ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 6.022137 इंटू 10 रेस टू 23. 10 रेस टू 23 वहां पर रह गया है. मी परत एकदा सांगतो बघा, ह्याचा आन्सर किती आलाय? 6.022137 इंटू 10 रेस टू 23. 10 रेस टू 23 राहिलेला आहे. परत एकदा 6.022137 into 10 raised to 23 atom per mole. Atom per mole, and this is very important value, and this value it is known as Avogadro constant. आगे देखना हमें Avogadro constant. What is the value of Avogadro constant? That is Avogadro constant, it is equal to 6.022137 into 10 raised to 23. It is the value of Avogadro constant or Avogadro number. Okay, so 10 raised to 23 वहां पर रह गए हैं. Thus 1 mole is the amount of substance that contains, म्हणजे कुठलाही मॉलिक्यूल 1 मोल असेल. अगर कोई भी मॉलिक्यूल 1 मोल होगा तो उसमें पार्टिकल, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल कंटेन्स 6.0221367 into 10 raised to 23 particles, atoms, ions, molecules or electrons. Okay, so this is very important concept. 1 mole is the amount of substance that contains 6.0221367 into 10 raised to 23 particles, atoms, ions, molecules or electrons. So therefore 1 mole of any compound contains 6.0221367 into 10 raised to 23 atoms, ions, molecules, particles, electrons, etc. मैं यहाँ पर 4 टेबल दिए, देखो. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 ग्राम. 1 ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16. एवरेज एटॉमिक मास कितना है? 16 ग्राम. 1 मोल ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 16 ग्राम. ऑक्सीजन एटम भी 16 है, मीथेन भी 16 है. 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला है. 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 44 ग्राम. एंड 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन, Na प्लस मीन्स आयंस, आयन है वो. सो 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन इज इक्वल टू 22 ग्राम. ओके, अभी आपको यहाँ पर क्वेश्चन रेज हुआ होगा, 22 कैसे? Na का है 23, बट Na सोडियम एटम लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस Na प्लस आयन. सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद Na प्लस आयन बनाता है, Na प्लस आयन बन जाता है. मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, मीन्स उसका एटॉमिक मास 1 से डिक्रीज हो गया. सो 23 का क्या हो गया? 22. सो 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन इज इक्वल टू 22 ग्राम. ओके, सो इट इंडिकेट्स दैट 1 mole of oxygen atom, that is 16 gram. So it contains, it is 1 mole, so that's why it contains 6.022 into 10 raised to 6.0221367 into 10 raised to 23 atoms. 1 mole of methane molecule, ऊपर ऑक्सीजन एटम है इसलिए एटम है, 10 raised to 23 एटम है. 1 मोल ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है इसलिए मॉलिक्यूल 16 ग्राम. मीथेन इज 16 ग्राम and it is equal to 6.0221367 into 10 raised to molecule. 1 mole of carbon dioxide molecule, it is 44 gram, na? So that's why it contains 6.022 into 6.0221367 into 10 raised to 23 molecules. 1 mole of sodium ion, that is 22 gram.
So it is equal to 6.0221367 into 10 raised to 23 ions, and 1 mole of NaCl, that is 58.5 gram, it is equal to 6.0221367 formula unit of NaCl. Means it indicates that 1 mole of any compound, 1 mole of any compound, any molecule, any substance containing how many atoms, ions, molecules? 6.0221367 into 10 raised to 23. कुठलाही मॉलिक्यूल जर 1 मोल असेल तर त्या मॉलिक्यूलमध्ये, त्या कंपाऊंडमध्ये, त्या सबस्टन्समध्ये ॲटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल्स किती असतात? 6.0221367 into 10 raised to 23 एवढे ॲटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स, पार्टिकल्स किंवा इलेक्ट्रॉन असतात. ओके, सो दिस इज very important concept. So therefore finally इथे दिलेला आहे, therefore the number 6.0221367 into 10 raised to 23 is known as Avogadro constant or Avogadro's number. It is indicated by Na in the honor of Amado Avogadro. So the number 6.0221367 into 10 raised to 23 is known as Avogadro's constant or Avogadro's number. It is indicated by Na in the honor of Amado Avogadro. Okay, so this is Avogadro constant. This is a very important concept. व्यवस्थित बघायचं आहे, व्यवस्थित ऐकायचं आहे व्हिडिओ, कारण हा इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. नाव मोलार मास. मोलार मास, what is molar mass? The mass of 1 mole of substance. Molar mass म्हणजेच molecular mass. Molecular mass is equal to molar mass. So the mass of 1 mole of a substance, that is substance means element or compound, the mass of 1 mole of a substance, element or compound in gram is called its molar mass. Molecular mass अभी तक हमने यूनिफाइड AMU में निकाला है, U में निकाला है. नाउ मोलार मास इन ग्राम, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलार मास. द मोलार मास, यहाँ पर दो फैक्टर है, एलिमेंट और कंपाउंड. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एलिमेंट, द मोलार मास ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम, the molar mass of any element in gram is equal to atomic mass of that element in U, unified mass. The molar mass of any element in gram is equal to atomic mass of that element in unified mass. टेबल है. सो एलिमेंट दिए हैं हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. एटॉमिक मास ऑफ दिस एलिमेंट इन यू इज 1.0, 12.0, 14.0 and 16.0 U. So what is its molar mass? Molar mass of these elements is 1.0 gram per mole, 12.0 ग्राम पर मोल. यहाँ पर U में है, एटॉमिक मास U में है, मोलार मास ग्राम में आ जाएगा. 1.0 ग्राम पर मोल, 12.0 ग्राम पर मोल, 14.0 ग्राम पर मोल, 16.0 ग्राम पर मोल. ओके, सो दिस इज molar mass of element. Now similarly, molar mass of any compound or substance, molar mass of any compound or substance in gram is equal to its molecular mass or formula mass in U. Molar mass of any compound or substance in gram is equal to its molecular mass or formula mass in U. For example, compounds. Oxygen, this is the compound or molecule. CO2, methane, water, NaCl. O2, molecular mass it is 32 gram. CO2 molecular mass is 44U. Sorry, O2 32U, CO2 44U, methane CH4 16U, H2o 18U, and NaCl is 58.5U. Okay, now what are their molar mass? अभी उनका मोलार मास कितना आएगा? देखो, मोलार मास U का कन्वर्ट हो जाता है ग्राम पर मोल. सो 32U है, 32 ग्राम पर मोल हो गया. 44U 44 ग्राम पर मोल, 16U 16 ग्राम पर मोल, 18U 18 ग्राम पर मोल, एंड 58.5U, दैट इज 58.5 ग्राम पर मोल. सो दैट इज मोलार मास ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड. सो देयरफॉर मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का मोलार मास निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं? देखते हैं एलिमेंट कंपाउंड का मोलार मास कैसे निकालते हैं इन ग्राम.
sorry, molar mass of oxygen atom or any element, molar mass of oxygen atom is equal to Avogadro constant. What is the formula? Avogadro constant into atomic mass into 1 AMU. Avogadro constant, that is 6.0221367 into 10⁻23. एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, जो एलिमेंट दिया है उसका एटॉमिक मास लेना, ऑक्सीजन है यहाँ, इसलिए यहाँ पर 16.0 और 1 AMU की वैल्यू कितनी है? 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻24 -24. So Avogadro constant is 6.0221367 into 10⁻23 into 16.0 U into 1.66056 into 10⁻24. So this calculation gives the exact value 16.0 ग्राम पर मोल. किसी भी एलिमेंट का आप मोलार मास ग्राम में फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मोलार मास निकालना है, हाइड्रोजन आइटम, तो क्या करेंगे? एवोगैड्रो कांस्टेंट इनटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू वैल्यू ऑफ 1 AMU. तो यहाँ पर 16 की जगह पर हाइड्रोजन का 1 लेना है. आपको फाइनल आंसर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, 1.0 ग्राम. फॉर एग्जाम्पल मीथेन का निकालना है, मीथेन या फिर वाटर का मोलार मास निकालना है, तो क्या करेंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला? मोलार मास ऑफ H2o मॉलिक्यूल, H2 बिकॉज ऑफ H2 इज मॉलिक्यूल. मोलार मास ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एवोगैड्रो कांस्टेंट इनटू मॉलिक्यूलर मास. एटॉमिक मास नहीं आएगा यहाँ पर अभी. मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 इन U, एवोगैड्रो कांस्टेंट इनटू मॉलिक्यूलर मास इनटू वैल्यू ऑफ 1 AMU. सो 6.0221367 इंटू 10⁻23 into 18U into 1.66056 into 10⁻24. फाइनल आंसर वाटर का मॉलिक्यूलर मास ग्राम में कितना आएगा? 18 ग्राम पर मोल. ओके, दिस इज मोलार मास. नो मोलार वॉल्यूम, इसके आगे अभी मैं एक इंपॉर्टेंट टेबल देने वाला हूँ, वो अगले पीरियड में पढ़ाऊंगा मैं. सो मोलार वॉल्यूम, व्हाट इज मोलार वॉल्यूम? अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, 1 मोल ऑफ एनी गैस, according to Avogadro's law, 1 mole of any gas occupies a volume of 22.4 decimeter cube at constant temperature and pressure. Constant temperature means 0 degrees Celsius and pressure is 1 atm. So standard temperature, this temperature and pressure, it is known as standard temperature pressure, that is STP. STP means standard temperature pressure. According to Avogadro's law, 1 mole of any gas, एवोगैड्रोस कांस्टेंट में कैसे है? 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड कंटेनिंग हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी एटम्स, हाउ मेनी आयंस. कोई भी कंपाउंड अगर 1 मोल होगा तो उसमें एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? 6.0221367 इंटू 10⁻23 ना. सो सिमिलरली मोलार वॉल्यूम भी वैसे है. अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, 1 mole of any gas occupies a volume of 22.4 decimeter cube at standard temperature and pressure. So temperature is 0 degree Celsius, 0 degree Celsius, it is a standard temperature, and 1 atm pressure, it is a standard pressure. It is known as STP. Okay. So कोई भी गैस, कोई भी मॉलिक्यूल अगर 1 मोल होगा तो उसमें मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 6.0221367 इंटू 10⁻23 और उस मॉलिक्यूल, उस गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 dm3. ओके, सो मोलार वॉल्यूम इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ 22.4 dm3. मोलार वॉल्यूम, ये डेफिनेशन है. द वॉल्यूम ऑफ 22.4 dm3 एट STP इज नोन एज मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस. इट इज नोन एज मोलार वॉल्यूम. ओके, आगे है रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम ऑफ गैस. वो रिलेशन मैं कल पढ़ाऊंगा. ओके, थैंक यू.